इतना सा फर्क है कुछ होने में और बहुत कुछ होने में। इतना सा फर्क है एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में कि अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी कि एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और सातवें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा है। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया। Hello and good afternoon, everyone, and thank you so much for joining us on this webinar called Business Opportunity Over Chai. Business Opportunity Over Chai is a webinar series presented by the management of Franchise India every day at 12 o'clock in the afternoon with an aim to introduce you to a new business opportunity. Every day we bring exciting and high potential franchise business from across the industries. Over the past 28 years, Franchise India has proudly helped thousands of investors finding the right business opportunity and successfully start their entrepreneurial journey. Franchise India, as world's largest integrated franchise solution company, our role is to ensure that your investment is safe by taking an informed decision and your journey from an investor to entrepreneur is smooth and successful. The objective of this webinar is to give you a direct connect with the brand founders, the key stakeholders, understand the business opportunity in detail, and openly ask any sort of question which you may have related to the brand, the business, the growth before you take the actual decision. In today's webinar, we are going to explore an exciting business opportunity with Adani Cement dealership. Adani Cement is one of India's leading cement manufacturer, offering a comprehensive range of high-quality cement products for residential, commercial, and infrastructure projects. Backed by the strength of the Adani Group, the company has built a robust distribution network and is focused on expanding its market presence through the strong dealership partnership. With a customer, the centric approach, competitive business economics, and commitment to long-term growth, Adani Cement provides entrepreneurs with an opportunity to become a part of India's fastest-growing building material companies. To talk more about this, I'm joined with Mr. Dhaval. Dhaval is heading the sales and the channel management. We have Mr. Gaurav Arora, who is the Chief Growth Officer in Jazinda. And we also have Mr. Dr. Prem Shalin. He's the business head of channel. So before I invite, Dhavalji to talk more about the business opportunity which we are offering to all our investors, I would like to inform all our viewers that in case if you would like to ask any questions related to the brand or the business, you please keep it sharing
in the chat box, and we will take them up during the presentation. I can also see people requesting me to speak in Hindi. Yes, we of course बिल्कुल हम हिंदी में बात कर सकते हैं राकेश जी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप पहले तो इसको हम बिजनेस मॉडल को समझेंगे, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको Q&A करके एक ऑप्शन है आपके मोबाइल पे, और उस पे आप लिख सकते हो और हम उसका आंसर करेंगे। And at the same point of time, we have Mr. Reddy, who is expecting me to speak in English, right? So, yeah, I mean, we'll ensure that we'll have a mix of both the language, right? No, I think I should request first Gaurav who's our Chief Growth Officer, to set a little bit of perspective, and then we'll invite Dhavalji. Hi, thank you so much, everyone, for joining in this lovely afternoon. And thank you, Bharat, for setting up the prospect and inviting one of the leading brands of our country, Adani family. And the opportunity today, as we have today, is with regards to the energy sector. So we have Adani Cement as the offering today. So friends, before we discuss further on the Adani Cement as an opportunity, मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि कैसे आपको फ्रेंचाइज इंडिया टीम आपके शहर में, आपके लोकल विसिनिटी में आपको हेल्प कर सकती है। सो वाइल वी डिस्कस ऑन एनी अपॉर्चुनिटी, आइडिया इज कि आपको उस ब्रांड के बारे में, उसकी पूरी जर्नी के बारे में, उस ब्रांड की जो कोर टीम है, जो उनके लीडरशिप टीम है, उनके विजन मिशन के बारे में आपको पता चले, उसके बारे में क्या इन्वेस्टमेंट हो सकती है, क्या उसमें आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, टाइम है, अपॉर्चुनिटी है, या उसमें क्या ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं, वो सब कुछ आपको इस पर्टिकुलर वेबिनार में जानने को मिलेगा। इसलिए हमने ब्रांड टीम को रिक्वेस्ट किया कि वो आए और अब इस पर्टिकुलर विंडो के थ्रू आपको एक्सप्लेन करें कि ओवरऑल क्या इस अपॉर्चुनिटी के साथ आपको जो है वो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स मिलते हैं। लेकिन जब आप हमारी टीम से कनेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली ब्रांड जो आपको बता रहा है उससे बियॉन्ड अगर आपको कुछ ऐसा जानना है जिसमें आपको लगता है कि एक वन ऑन वन हार्टफेल्ट डिस्कशन आप करना चाहते हो, एक आप ऐसी बात करना चाहते हो जो बहुत पर्सनल है और जो आपको लगता है कि इस विंडो में आप नहीं कर सकते हैं, तो आप मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। हमारे ऑफिस इंडिया के हर शहर में है आज की डेट में। और आप अगर हमारे इस पर्टिकुलर वेबिनार में चैट बॉक्स को यूज करते हुए मेंशन करोगे कि आपका लोकेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपका इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कोई एक्सपीरियंस है, रेलेवेंट या नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप इंडस्ट्री में तभी जुड़ सकते हो, सीमेंट इंडस्ट्री में या किसी भी और पर्टिकुलर ब्रांड के साथ जुड़ सकते हो जब आपका उसका रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो। तो ये पर्टिकुलर जो एक परसीव्ड वैल्यू है या एक परसेप्शन है या एक रॉन्ग कंसेप्शन है आपके दिमाग में, इसको आप हटा लीजिए। फ्रेंचाइजिंग का मतलब यही है कि टेक्निकल नो हाउ आपको ब्रांड देता है, प्रोडक्ट आपको ब्रांड देता है। जितनी भी ब्रांड की जर्नी है जिसमें उन्होंने जो भी अपने लर्निंग करने थे, अच्छे बुरे, वो सब कर लिए हैं, और अब वो आपको हाथ में एक ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं जिसको आप मार्केट में लेके जा सकते हो। वो एरर फ्री प्रोडक्ट है, लेकिन आप उसके साथ जुड़ के कैसे फायदा उठा पाओगे वो आपको फ्रेंचाइज इंडिया की टीम ब्रांड से जुड़ने से पहले असेसमेंट करके बता देती है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई ब्रांड या कोई अपॉर्चुनिटी चूज करते हैं, उसमें आप किस मार्केट में करना चाहते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कितना टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उस पर्टिकुलर मार्केट में क्या कंपटीशन है, क्या अपॉर्चुनिटी है, और आपका अपना पर्टिकुलर एजुकेशन या फैमिली बैकग्राउंड या आपका जो अपना माइंडसेट है उस पर्टिकुलर बिजनेस को लेके वो कितना ब्रांड के विजन के साथ अलाइंड है, ये बहुत जरूरी है। तो ये जब आप हमारे साथ बैठते हैं वन ऑन वन डिस्कशन में, हमारे ऑफिस में या हमारी टीम के साथ टेलीफोन पे बात करते हैं, ये एक डिटेल्ड असेसमेंट हमारी टीम आपको करके बता देती है कि कितना जो आप सोच रहे हैं उस ब्रांड के बारे में वो सही है, या उसमें और क्या हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिससे वो आपको और सही लगे। और ऐसा भी होता है कुछ केसेस में कि शायद आप जो सोच रहे हैं, जो आपकी एस्पिरेशन है या जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, वो शायद ब्रांड की विजन के साथ अलाइंड ही ना हो, तो शायद आप एक रॉन्ग फिटमेंट में भी जा सकते हो। तो इसलिए बेहतर है कि हमारी टीम के साथ जुड़िए, अपना लोकल इंटरेस्ट जो आप जानना चाहते हैं उसको आप समझिए, और उसके बाद ब्रांड के साथ वन ऑन वन डिस्कशन में जाइए। लेकिन इस पर्टिकुलर वेबिनार में जब आपने ज्वाइन किया है, सो अगले आधे घंटे 40 मिनट के लिए गिव योर सेल्फ द बेस्ट अटेंशन, unbiased approach, and be as vigilant as possible and listen to what Dhaval and Dr. Prem are going to be talking about with regards to Adani, with regards to cement, with regards to the opportunity associated with this brand today, with this industry today, and with as low as investment of maybe 5 lakh rupees, you can start this business with about 100 150 odd square feet shop, right? A real estate in any part of the city where
you have an interaction with the customer base where there is a household development happening, where there is a potential of the building material that you can sell in the market. तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, समझिए, ध्यान दीजिए, और कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में मेंशन करिए, लेकिन अपना नाम, नंबर और अपनी सिटी प्रेफरेंस जो है आपकी, उसको जरूर मेंशन करिए. So I request now Bharat to invite the esteemed speakers today from the brand side and give their intelligence, give their knowledge to our audience who have joined in this afternoon to learn the opportunity. So over to you, Bharat, and thank you so much Thank you. again Thank you. to Thank all you, my Gaurav. dear viewers who have joined today in this afternoon. Thanks, Gaurav. Thank you so much. Or right. So yes, I have received the speak in Hindi, English, both. I'm not sure how to manage it, but still, yes, I would request Dhaval ji to be bilingual in English, Hindi, दोनों में try करना आप explain करने का. And I can see a lot of people are now putting their name, mobile number, and the place they're from. Good, everyone. I really appreciate you all who all are, sharing your details. So please keep on sharing your, the name, number, and the place you're from. Yeah, Dhavalji, over to you now. Yeah. Thank you, Bharatji. Thank you, Gauravji. Good afternoon, all of you, and welcome to Adani. Right, I have Dr. Prem Sharin sir, who is our head of whole channel business for Adani Cement division, and Prem sir is Hi. Good morning, everyone. Good afternoon, everyone. yeah. So, so before starting, I will just give a contest for Adani Group. I mean, what is Adani and how we are performing in the आगे से market, आगे and से then you can take आगे it से over for business, right? So team, we belong to Adani. Adani Corporate is now a well-established and a big giant group in India now, and Adani's presence in multiple sectors like cement, infrastructure, then solar energy, green energy, logistics, then realty business, ports, both airports and seaports, like that. And now we are expanding, our network in Pan India, not only in Pan India, but even outside India also. So before going uh, with a talk, I would like to show you what Adani is there and how we are expanding. I will just share my screen. Bharatji, you can just tell me whether Sure. I'll tell you. Yeah. The Adani Group is India's largest and highest rated infrastructure portfolio. It is also the world's fastest growing diversified business group. One of India's most iconic names, Adani is a multi-continental presence with major operations and investments across the world, including in Australia, Indonesia, Sri Lanka, Bangladesh, Tanzania and Israel. Headquartered in Ahmedabad, the group was founded in 1988 by Gautam Adani, a first-generation entrepreneur who rose to international prominence from humble beginnings. Mr. Adani is India's first founder to lead a business group to a market capitalization of $100 billion and also $200 billion. The majority of the Adani Group's assets and investments are in core infrastructure. This includes a mega-scale investment of $100 billion by 2030, targeted at equitable clean energy initiatives like renewable power, evacuation lines, green hydrogen, and green infrastructure. The group's pan-India presence spans 22 states, governed by the different parties spanning India's broad political spectrum, serving a user base of 320 million citizens through its core infra platform. Every Adani business is a market leader. Adani is the world's largest developer of renewable power. The group is India's largest private player in ports, logistics, airports, gas distribution,
defense, food FMCG, thermal power generation, power transmission, power distribution, and redevelopment. Adani is also in expressway development, online and television media, and metals like copper. Adani is also the Adani Group is India of 1 billion metric tons by 2030. The Adani Group is India's largest and highest rated infrastructure portfolio. It is including the Mumbai and Navi Mumbai international airports and handles 25% of India's passenger traffic and 33% of cargo, underscoring its pivotal role in the nation's infrastructure development. The redevelopment of Dharavi, which Adani is leading, is one of the world's most challenging infrastructure projects. In energy, Adani is leading one of the world's most extraordinary green energy transitions. In Gujarat's Khavda, Adani is executing the world's largest renewable energy installation with an incredible 30 gigawatts of capacity. This hybrid solar-wind renewable spark will generate over 80 billion units of electricity annually to power over 16 million homes. That's more homes than in Delhi and Mumbai combined. This global benchmark for sustainable generation of clean energy will also help India avoid 58 million tons of CO2 emissions every year. By 2025, Adani will be the world's largest solar power company, and by 2030, also the world's largest renewables company. With over 45,000 employees and over 300,000 direct and indirect workers, the Adani portfolio of companies is aligned with India's socio-economic growth policies, focusing on massive infrastructure development, middle-class consumption, and sustainability. Adani businesses have become key enablers of the national economy, accelerating India's growth momentum and providing essential services to its citizens. Through the Adani Foundation, its philanthropic arm, the Adani Group serves the less privileged sections of Indian society. With a dedicated network of skilled volunteers and social workers, the Adani Foundation touches over 7 million lives and addresses critical needs in underserved areas like health, nutrition, education, child welfare, women's empowerment, and skill development. In January 2023, a compilation of baseless and malicious allegations published by a US short seller against the Adani Group and amplified by the group's detractors led to a slide in Adani's market value. Many predicted that the group was finished and discounted any chance of a recovery. However, the Adani Group has not only passed the highest levels of legal, public and regulatory scrutiny, but has also emerged stronger than ever before in possibly the first of its kind comeback in the history of the corporate world. So this was about Adani Group, and now over to Dr. Prem Sharin sir. So we will be now getting a depth information regarding the cement business. Yeah, Prem sir. Yeah. Double, would you like to continue or should I? Because No, no, sir, just you I'm can. on You my can. way. No. Okay, Okay. okay. So actually I'm traveling, so I will not be able to come on the video. मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इसलिए वीडियो में नहीं आ सकता हूँ. ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. 10-15 मिनट का मैं आपको एक छोटा समझाता हूँ. आई जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ सीमेंट. Okay, the cement industry, the consumer, the distribution channel, etc. Okay, मैं आप लोगों को सीमेंट क्या है, सीमेंट का कंजम्पशन क्या है, सीमेंट इंडस्ट्री क्या है, कैसे चलता है, फिर उसमें डीलरशिप का क्या रोल है, ये सारी बातों के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊंगा. ओके, सो 15 मिनट कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में बिठाने वाली बात है. ओके, सो यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, just keep give attentions and record it all the things what I'm saying in your mind. Okay,
सीमेंट जो है ये बिल्डिंग मटेरियल के क्षेत्र में आता है. ओके, सीमेंट इज अ पार्ट ऑफ. धवल इसको बंद कर दे. धवल, आई विल एक्सप्लेन इट टू देम. जस्ट क्लोज दिस. हाँ. सो सीमेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के एक बाकी प्रोडक्ट है. मतलब सीमेंट इज अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री एंड सीमेंट डज नॉट हैव एनी अल्टरनेटिव. ओके, सीमेंट सीमेंट जो है वो बाइंड करता है. मतलब बाइंडिंग मटेरियल है आपका. कंक्रीट, प्लास्टर, ये सब चीजों को वो बाइंड करता है, मतलब बांधता है. सो इट डजंट हैव एन अल्टरनेट. तो इसीलिए सीमेंट इज ऑलवेज अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू सेल एंड मेक मनी, क्योंकि उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है. जैसा वुड का ऑल्टरनेट है, प्लास्टिक का ऑल्टरनेट है, वैसा सीमेंट का कोई ऑल्टरनेट नहीं है. सो एनीवन हु comes to cement doesn't go out of cement because there is no alternative. Second is cement grows every year as an industry by 10 to 15%. So cement grows because construction grows. Construction in India is growing at the rate of 15% for the next 25 to 30 years. Okay, so this is one of the growth sector. Construction is one of the growth sector, and cement is one of the biggest growth sector. So that's how this product is placed. Now in India, if you ask how many brands of cement available, if I ask you a question, you will say 5 brands. Okay, अगर मैं आपको पूछूं कि भाई इंडिया में सीमेंट कितने ब्रांड्स है, तो आप लोग मुश्किल से 5-6 ब्रांड गिनती कर पाओगे. लेकिन actually in India there are more than 48 brands. 48 brands. Huh? It's a very, very regional player, regional game people play, and all India there are 5 to 6 big brands which sells nationally. So that is how the cement industry is there. It's global, at pan India. At the same time, it is regional. So very specific to particular regions and areas. Okay. Now, when you look at this industry, uh, cement क्या करता है? What does cement do? I told you. Cement also is one of the product which is not stocked and consumed. मतलब सीमेंट में ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई घर पे सीमेंट रखा और कंज्यूम करता रहेगा, ऐसा नहीं है. इट इज एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. सो जब जब आदमी घर बनाता है, व्हेन अ पर्सन इज मेकिंग ए हाउस, he will buy cement as and when it is required. It's not an impulse buying product. It is basically a planned buying product. ओके, तो नन ऑफ यू इन योर लाइफ टाइम ऐसा सोचा होगा कि 2 बोरी सीमेंट लेके घर पर रखता हूँ मैं. ऐसा कोई सोचा नहीं होगा. नोबडी वुड हैव थॉट इन योर लाइफ that I will buy two bags of cement and just keep it in my house or in my godown. It never happens. Whenever there's a requirement, people will come and buy the product. Okay, so that is how cement is all about. Now in cement there are 2 types of businesses. 2 तरीके का businesses है cement में. एक है trade and एक है non-trade. Okay. Now this is very important for you to understand. Trade means हमारे parlance में. In our parlance, trade is basically we sell through our dealer. Okay, we sell through our dealer. So that's a trade. So we have almost the 25,000 dealers and 70,000 retailers pan India, who are basically spread across India in 640 districts roughly. 640 डिस्ट्रिक्ट में हमारे सारे लोग है, मतलब डीलर्स है, और ये बेचते हैं इंडिविजुअल हाउस बिल्डर को. नाउ व्हाट इज दिस इंडिविजुअल हाउस बिल्डर? आईएचबी वी कॉल देम एज. ये इंडिविजुअल हाउस बिल्डर वो होता है जो एक प्लॉट होता है उसके पास 1,000 स्क्वायर फीट का, 2,000 स्क्वायर फीट का, एंड ही वांट्स टू बिल्ड अ हाउस. ओके, so individual house builder means a person who has got a plot of 2,000 square feet and he wants to construct a bungalow. That is called as individual house builder. Okay, so we 65% of the market is that. 65 to 70% of the market is trade, and 35% market is non-trade, which is your metro, dams and roads and rails, etc., which contributes to 35%. So that is basically infrastructure. We call them as infrastructure. So 2 businesses we have. One is infrastructure business, other is retail business. Okay. So here we are seeking dealers for dealers. Be very specific. Dealers for
our retail business. So you are all here to understand more about this dealer. Who is this dealer all about? Okay, not the infrastructure project. But why? Because infrastructure projects, you don't get more money. Okay, you don't make money there. But in trade, the companies make money, and the trade is a very tough game, and we have pioneered that. Adani and ACC, Adani, ACC, Ambuja, we have pioneered that over a period of 100 years. ACC is a 100-year-old brand, and Ambuja is 40-year-old brand. So we have pioneered this play of going to the end consumer. जो IHB है उसके पास जाना पहुंचना और उस छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन साइटों में माल बेचना और वहां पे हम लोग वहां से ऑर्डर लाना. तो इसके लिए हमारे पास चैनल नेटवर्क है. ओके, so that is the dealer. So we will be talking more about dealers. We will be talking more about this IHB customer and related things. So you are all are जो जितने लोग आप लोग यहाँ पे है ये सब इसी चीज के लिए है, डीलर बनने के लिए है. ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट C&F हम लोग बनाते नहीं है. उसका रीजन बताऊंगा मैं. वी डोंट हैव अ डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, ऐसा भी नहीं होता है. सिर्फ हमारे पास होता है डीलर्स. ओके, अक्रॉस इंडिया वी हैव डीलर्स हु वर्क फॉर अस एंड रिटेलर्स. सो हम लोग डीलर को माल बेचते हैं, कहीं कहीं पर डीलर जो है रिटेलर को भी माल बेचते हैं. सो दैट इज हाउ द whole operation is established, and that's how the whole operation is done. Okay, now let us understand हमारे सिस्टम में 3 प्रकार के डीलर होते हैं. 3 प्रकार के डीलर. ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहला जो डीलर होता है वो छोटा से शुरू करता है, हम उसको बोलते हैं प्योर रिटेल डीलर. प्योर रिटेल डीलर का मतलब ये होता है कि उसका एक दुकान है, he has got a shop in a area where there is plotting happens or where the construction activity is more. Like सिटी के अंदर कंस्ट्रक्शन कम होता है ना, सिटी के बाहर ही होता है. सो ही हैज गॉट द शॉप देयर और वो 200-300 टन अपने काउंटर से बेचता है, एंड कंज्यूमर को बेचता है वो. So we classify them as pure retail based dealer. Okay, then we have a second set of dealer called as hybrid dealer. हाइब्रिड डीलर का मतलब ये होता है कि वो 500,000 टन करता है, बट वो एंड कंज्यूमर को भी माल बेचता है और वो कुछ कुछ रिटेलर को भी माल बेचता है. ओके, सो मेरे पास एक बड़ा दुकान है 2000 स्क्वायर फीट का और मैं बिल्डिंग मटेरियल का सारा आइटम बेचता हूँ. आई सेल ऑल द आइटम्स इन द बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री. आई एम व्हाट यू कॉल इन्फ्लुएंसर इन दैट एरिया, and I sell, okay, marble, tiles, steel, and cement also. So 50% of my 50% of my sale comes from end consumer, and 50% of the sale comes from reselling. So that is called as hybrid dealers. Okay. So this is one set of dealers, and then the third one is called as pure wholesalers. Okay, they are big guys. They are like 5,000 tons, 10,000 tons, 25,000 tons they sell, and they are financiers. Financiers means they don't have shop, but they have big offices and they have people under them, and they go and sell to the retailer. उनके पास बड़ा offices नहीं होता है, बड़ा ऑफिस होता है और ऑफिस में बैठ के वो माल बेचते हैं और वो फाइनेंस करते हैं. दे आर मोर ऑफ फाइनेंसर. सो दिस 3 सेट ऑफ डीलर्स, ये तीनों हर मार्केट में आपको मिलेंगे, हर मार्केट में मिलेंगे. उसका रीजन है क्यों तीनों चाहिए. क्योंकि अगर आप देखोगे एक छोटा सा जाए कहीं पे भी इंडिया का ज्योग्राफी अगर आप देखोगे तो हर हर किलोमीटर पे या हर आधा किलोमीटर पे आपको एक सीमेंट का दुकान मिलेगा. हाँ, 1 मिनट होल्ड करिए. थैंक यू. सो हर हर किलोमीटर में आपको हर आधा किलोमीटर में आपको एक डीलर मिलेगा. क्योंकि सीमेंट, जैसे मैंने बताया कि जब एक कंज्यूमर 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाता है, तो 1000 स्क्वायर फीट का जब घर बनाता है तो उसको 10 महीने लगते हैं बनाने के लिए. उसको 10 महीने लगता है बनाने के लिए. और वो 10 महीने में क्या करता है, वो जब जब सीमेंट उसको जरूरत पड़ता है तब तब उसको लेता है वो. लाइक फॉर एग्जांपल के लिए क्या करता है वो, कभी उसको लगता है कि जब वो प्लॉटिंग करता है, प्लॉट करने के बाद जब वो अपना फाउंडेशन डालता है तो 10 बोरी चला जाएगा. ऐसा वो 10 महीने में वो सर्विस उसको चाहिए. और सबसे ज्यादा सीमेंट जो है वो लगता है उसका जब वो स्लैब डालता है. स्लैब, ओके, और स्लैब में उसको सबसे ज्यादा सीमेंट लगता है. ना ये प्रतिक्रिया के कारण क्या है, उसके जो साइट जहां पे भी है उस साइट के आजू बाजू में जो डीलर है उससे वो माल उठा लेगा.
that is the point. तो ये जो प्योर रिटेलर है, प्योर होलसेलर है और हाइब्रिड डीलर है, ये तीनों के साथ जब उठाता है ना माल, तो ये तीनों का माल उठा के वो उसको उसको डिस्टेंस नजदीक में चाहिए। मैंने आपको बताया ना पहले कि वो स्टॉक नहीं करता, नोबडी स्टॉक्स। So whenever he gets the material, he wants the material. Somebody has to deliver him. Somebody has to service him that material. That is how it works. And hence there is always a pressure on the logistics team to get this guys off and running, because जैसा जैसा चाहिए उसको वैसा वैसा डिलीवरी चाहिए, जैसा जैसा चाहिए उसको वैसा वैसा माल मिलना चाहिए, नहीं तो वो बेचारा घर नहीं बना पाएगा। ओके, तो इसीलिए मैंने कहा कि हर 300 में हर 300 जगह पे उसको हाँ, हाँ, उसको हर हर आधा किलोमीटर पे आधा किलोमीटर पे उसको जरूरत रहता है और आधा किलोमीटर के अंदर से वो माल लेता है। ओके, सो whenever it is required he needs that material. If it doesn't get the material तो ब्रांड स्विच कर देता है, दूसरा ब्रांड की तरफ चला जाता है वो। ना ये फिनोमेना के कारण अपने को ज्यादा डीलर चाहिए और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्केट में चाहिए होता है। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड पॉइंट। आप लोग सब सोचते होंगे कि यार ये अडानी इतनी पुरानी कंपनी है एसीसी अंबुजा, हमको क्यों ये डीलरशिप का ऑफर आ रहा है, या डीलरशिप क्यों हमको दे रहा है, एग्जिस्टिंग डीलर क्यों नहीं काम कर रहा है। ओके, दिस थॉट आपके माइंड में आता होगा। उसका रीजन क्या है कि हमारे पास हमको जितना भी हमने पिछले 6 महीने में 3 साल में हमने कम से कम हमारा कैपेसिटी डबल। Right, I understand. एक मिनट आप प्लीज रुक जाओ, मे बी आई थिंक प्रेम सर you're not audible. Prem sir, we can't hear you. You may continue, maybe Dhaval. अगर आप देख। Am I now audible? Yes. Okay, sorry for that thing, mishap. Something happened. Yeah. So, so this we have almost doubled our capacity in the last few years, and hence we want more channel partners to come in. ओके, नाउ ये चैनल पार्टनर्स का मैंने आपको बताया कि 3 तरीके का चैनल पार्टनर्स होता है हमारे यहाँ पे, वो बता दिया मैंने आपको। और ये इसकी स्प्रेड इंडिया में, अगर आप जहाँ पे भी खड़े हो अभी, अगर आप मुड़ के देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक कंस्ट्रक्शन साइट तो दिखेगा ही दिखेगा। सो कंस्ट्रक्शन साइट का इंडिया में कोई कमी नहीं है, इट इज ह्यूज। ओके, तो हम लोग भी जो फैक्ट्री से जब माल बनाते हैं तो फैक्ट्री में हम लोग स्टॉक नहीं करते हैं, वी डोंट स्टॉक इन द फैक्ट्री। ओके, डायरेक्टली प्लांट से माल निकलता है और सीधा साइट पे जाता है माल। ओके, तो लॉजिस्टिक्स का आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग को फैक्ट्री से पूरा निकाल के माल आपके घर तक पहुंचा देंगे और आपका कस्टमर के साइट में भी डिलीवरी हम लोग करते हैं, बिकॉज दैट्स समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि ये माल जो है अल्टी पल्टी होता है, फैक्ट्री से निकला डायरेक्टली आपके गोडाउन में उतारेगा तो उसमें पैसा लगता है। सो नोबडी, वी डोंट आस्क पीपल टू स्पेंड मनी in terms of what do you call to unload the material and then to again load the material. All that thing, it incurs little cost. So we don't ask people to do that. We directly send it from our godown and then we service it. तो ये हम लोग अपने हिसाब से करते हैं इसको हर जगह पे, तो उसका आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको इसको शुरू करना है बस। that's how it is. So once you start doing it, rest of the things we take care. तो एक बार आपका जो प्रोसेस हमने सारा प्रोसेस का हमारा डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस अगर आपने पूरा कर दिया तो उसके बाद फिर हमारे लोग लग जाते हैं आपके हैंड होल्ड करने के लिए। 12 महीना तक हम लोग हैंड होल्ड करते हैं, ब्रांडिंग हम लोग करते हैं, सारा चीज। हमारा टेक्निकल सर्विसेज का टीम रहता है जो बहुत बड़ा टीम होता है, वो लोग मार्केट में आपके लिए काम करते हैं। फिर हमारा सेल्स का टीम है, ऑल इंडिया वी हैव 1500 पीपल। ओके, उसमें 800 to 900 पीपल आर सेल्स गाइस
and then rest of the people are technical people. Technical means they are engineers, civil engineers, whose work is to go day in and day out and convert the customer, work with the influencers, work with the architects, engineers, etc., etc. And that's how the business starts. Now, we as a company, we as Adani want many entrepreneurs to join us. Okay, we are giving this opportunity. If you would have seen अभी पेपर में आया था वंदे वंदे भारतम करके, we हमारा जो चेयरमैन है मिस्टर गौतम अदानी, he has launched few initiatives on that on his birthday. Make as many as entrepreneurs as possible, make as many as the innovation, to identify innovation and scale them up. So there are many initiatives like that are going in our company, and that's the part where we said, okay, cement also we should look at people who wants to become businessman, who wants to get into building material industry as such, and then start with cement, and then they can become big guys. हमारे सिस्टम में we have people with most of our dealers are 25-year-old, 30-year-old, 40-year-old, even the transporters are that old. Why? The reason is simple, that we are a very, very old traditional company, culture driven company, very systematic company, and very, very clear direction that we are, very transparent company. So people don't leave us. Okay, I mean, some of them have left us, but they came back. They come back and say, सर आपके कंपनी में जो मिलता है दूसरे का कंपनी में नहीं मिला हमको वो चीज. There are many things like that. So we not only do sales, but we do a lot of engagement activities. We do a lot of what you call incentivization programs. We have we connect with your spouses, we train your children, and all that. There are a lot of activities that we do. Cement में हम लोग सबसे ज्यादा activity हम लोग engaging with you, with your family and with your salesman and etc., and then develop them. So people don't leave us and go. हमारे को कोई छोड़ के जाता नहीं है. आप कोई भी मार्केट में जाके देखिए, हमारा पुराना डीलर होगा, 25 साल 30 साल पुराना डीलर होगा, शुरू हमसे किया और आज बहुत बड़ा आदमी बन गया हो. That is a kind of relationship that we have with our people. Now, coming to the ROI part, cement gives ROI more than 40-45%. Okay. Now, if you put your money in the bank, you may get 8%. 8% आपको मिलेगा. Okay, but if you put in some business in FMCG, I don't know from which business background you all are, but FMCG gives you 18 to 20%. Consumer durables give you 25%, less than 25. Cement is one product range. मैं FMCG consumer durable सब जगह काम किया हुआ आदमी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि cement is the only brand, only product in the country which gives ROI more than 45%. 45 to 50% also I've seen people making ROI. यानी कि in the month of January 1st of January, if you put 1 lakh rupee as an investment, okay, and if you on December 31st, if you wind up your business, you will have 1,50,000 rupees in your account. Okay, so that's the kind of ROI that cement gives. Okay, this is one big thing. Second is cement also helps you to get more customers into the counter. तो सीमेंट का बोर्ड लगते ही आपके पास कस्टमर आना शुरू हो जाएगा, एंड उसके साथ साथ फिर आप और भी प्रोडक्ट बेच सकते हो. मतलब आप बहुत सारे व्यापारी they will take steel, they will take other hardware, plywood, and multi product category they start doing, because that same customer, when he comes in the beginning and he is there till the end if you have cement with you. So that's very interesting, isn't it? आपके पास अगर सीमेंट है, सीमेंट का बोर्ड लग गया, so that customer will not go away from you. He is there. So his stickiness is there because of the cement. And then during the course of construction journey, he will ask you for some products, and you have to keep on giving him that product. Okay. So many of our people have mastered this art of taking multi-brand, multi-product dealership, and they are big guys now in the construction industries. Okay. Even some of our dealers, they do a turnover of 1,000 crores yearly. Okay, so that's the kind of business they are in. Okay, so so that's very interesting to note this. So ROI is very good.
And the reason for ROI is that you don't carry stock. So, for example, if you do franchising with any other company or any other brand, they will tell you have to invest 1 crore rupees in the beginning. You have to set up a big shop, okay, big franchisee outlet. All that they will tell, and then you need to have this much of infrastructure. So you have to invest money to get some ROI. But in cement, it is not like that. Cement, you have to as you progress, as you grow, you have to invest money. I mean, you start with a small shop, start with 2 lakh rupees of deposit with us, and then the formalities. Then rotate for money rotation, for stock rotation, you need to have maybe 5-6 lakh rupees in your hand. As and when the customer comes in, you sell. आप उसको बेचोगे माल को, फिर वापस खरीदोगे, बेचोगे, खरीदोगे. पहले महीने आपने 100 टन किया, दूसरा महीना 150 टन किया. तो जैसे जैसे आपका सेल बढ़ता जाएगा, as your sale progresses, you need to invest more money into it. Okay, that's the beauty of cement, because it doesn't have you don't have to carry stock. Huh? In upcountry market, somewhere, some places you may have to carry some stocks because the transit time from the plant, from the factory, may be little higher. So you need to keep some stocks in your godown if you're in an upcountry market, if you're in a rural market. Otherwise, we service your customers. Okay. So gradually, what happens is as you progress, as you sell more, as your turnover increases, you need to put in money. Okay, so that's why the ROI is very important. So typically, our dealers, existing dealers, rotate the money 24 times in a year, and minimum they make 2 to 3% net margin. Minimum net margin I'm talking about, because expenses are also not much because the shop rent is what. I mean, in a good area, you may get for 20,000 rupees per month. So that's nothing compared to a big franchise investment that you are already done or you would be doing in some place. So that from that perspective, the ROI is very good, and you can make money from the day one. Okay, if you are little hardworking. Now, what we want from you is that you need to initially 2-3 months you need to work hard, because if you are new to the cement industry, then naturally you need to know the nuances of cement. आपको cement के बारे में समझना पड़ेगा, cement का market में क्या हो रहा है समझना पड़ेगा, contractor कौन है, influencer कौन है, engineer कौन है, ये some learning, and it takes only 3 months. Let me tell you, I have seen people who join us, and in the third month they start doing 300 tons gradually. Okay, 300 tons. Huh? So each bag average cost is maybe 300 tons average, 300 rupees average cost. 1 ton means 20 bags. So 300 into 20 into 300 tons, that's the turnover that you are making. Just imagine from the third month, fourth month. And these are all mostly cash sales to the end consumer. But if you are reselling, then you need to give some credit. And that is completely dependent on you. आपको देखना पड़ेगा कि वो क्रेडिट किसको देना है, किसको नहीं देना है. तो थोड़ा सा लर्निंग कर्व रहता है 2-3 महीने का, एंड देन यू स्टार्ट इन्वॉल्विंग योरसेल्फ, एंड देन इट टेक्स ऑफ फ्रॉम देयर. तो इस तरीके से बिजनेस चलता है, इस तरीके से इसका काम होता है. सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द इंडस्ट्री, आई हैव टोल्ड यू अबाउट अडानी, एसीसी, आई हैव टोल्ड यू व्हाई वी वांट यू, आई टोल्ड यू द चैनल स्ट्रक्चर, मैंने आपको बता दिया. फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि चैनल स्ट्रक्चर के बाद आपको आरओआई भी बता दिया. ओके, ब्रांडिंग का बता दिया मैंने कि हम ब्रांड करेंगे, हम आपको हैंड होल्ड करेंगे, ये सब भी बता दिया. सो इतना तो आपको समझ में आया होगा, नहीं तो यू कैन आस्क क्वेश्चन आफ्टर 2 minutes. Now, as these are all the actual facts what I told you. Now, there are some things which you need to be very careful. Okay, एक दो चीजें हैं. सबसे पहला, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए बिजनेस में, मेहनत करने को आना चाहिए. दूसरा, ये प्रोडक्ट जो है काला सोना है, इट्स ब्लैक गोल्ड. सीमेंट मैंने आपको बताया कि देयर इज नो अल्टरनेट नहीं है, देयर इज नो अल्टरनेट. इसका कोई और रूप नहीं है. सीमेंट ही होता है, उसका कोई, इट्स अ बाइंडिंग मटेरियल. इसका कोई कंक्रीट में सीमेंट नहीं होगा तो कंक्रीट घर बन ही नहीं सकता. ओके, सो इट्स नेचुरली नीडेड थिंग. एसीसी, अंबुजा दोनों बिग ब्रांड है. आपको बोलने की जरूरत नहीं कि भैया एसीसी सीमेंट बनाती है, अंबुजा सीमेंट बनाता है, तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है. ओके, आप जाओगे तो आपको there will be a positive response from the field, because everybody knows this brand. It's a legacy brand, so it's once in lifetime opportunity आपको मिल रहा है. अगर शायद मेरे को मिल गया होता 30 साल पहले, तो मैं नौकरी नहीं करता. I would have been in this field. It's a very interesting one. So the negative side is that people don't treat this as a glamorous product. अरे हमको तो क्या है कि ग्लैमर नहीं है, इसमें कचरा है,
You have to sell it sitting in a small shop, dingy shop. वहां पे कौन आता है, मेसन आता है, कॉन्ट्रैक्टर आता है, बीड़ी फूक फूक के वो इंजीनियर आता है. So you might have that kind of a phobia kind of a thing. So some of the people, they don't come down to that level. But my thinking is पैसा मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है. प्रोडक्ट इतना अच्छा आपके हाथ में दिया है और पैसा मिल रहा है तो कोई इशू नहीं होना चाहिए. सेकंड इज, जैसा हर ट्रेड में थोड़ा मारामारी होता है, प्राइस कटिंग, स्कीम्स काटेंगे लोग, वो ये अपने धंधे में, हमारे धंधे में भी है. ओके, सो दैट इज समथिंग विच यू विल पिक अप. इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पहला आप 3 महीना सीखो, 3 मंथ सीखो, हमको कोई घाई नहीं है. आप आस्ते 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 इसको पिकअप करो, सो दैट आपका पैसा फंसे नहीं मार्केट में. ग्रेजुअली यू लर्न एंड देन इन्वेस्ट, ग्रेजुअली यू लर्न एंड इन्वेस्ट. सो दैट कैपेबिलिटी यू नीड टू हैव. Some of you might be thinking, I have 5 crore rupees, I can give 5 crore rupees. We said, I don't want that 5 crore rupees because it's not required. Why unnecessarily I need 5 crore rupees when things can be done in 15 lakh rupees to start with? Okay. So your money is my money. Alternatively, I can take 1 crore rupee from you and 1 crore का सीमेंट आपके सर पे मैं डाल दूंगा, तो आप ऐसे ही पहले दिन से मर जाओगे. So we don't do that. We are a very methodical, stable company. Okay. So very, very clear. We are very cash rich, zero debt company. We are the only company in India in cement sector which has got zero debts. उधारी लेते नहीं हमको, तो हमको पैसे का जरूरत नहीं है. We make good profit margin, 15, 20, 25% margin we make. So Right. Thank you so much, sir. Just to summarize this, right? I can see a lot of questions. Just summarize the 3 different formats. How much is the investment required? एक मिनट दीपक जी, hold on. Let me finish and Sure. then I will. 1 more minute I'll take because that I've already discussed 3 different dealership. I told them the pure retail, which is basically you don't resell, you sell it to end consumer. Okay, that is pure retail dealers. Then I told them about hybrid dealers. I told them, I think probably you would have missed. So hybrid dealers are those dealers who have a good shop in a good location, maybe 20-year-old, 25-year-old shops. And these guys they sell 50% to the end consumer and 50% they resale. They may be selling it to 4 to 5 retail outlets. And the third one is the wholesalers. Wholesalers, they are big guys. They are financiers in the building material industry. Okay, and they don't sell from the counter, but they have wholesaling activities that they push volumes to the retailers. So each wholesalers may have 200, 300, 400, 500 retailers, and they sell on finances. Now, most of the people, they started as a pure retail outlet. They became hybrid over 5 years, and then they moved to wholesale. That's the journey. Okay. So I have never seen one single guy in my lifetime where a guy came with 10 crores of investment and he became a wholesaler on the day one. It doesn't work like that. Okay. He starts with 5-10 lakh rupees and then he builds his business and then he becomes a wholesaler over a period of 10 years. Okay. That's how this industry works. That is one. And the last point is that, the the transactions, don't worry about what is the selling price, what is the buying price. Oh, that all we will teach you once you join us. Okay. And there are, for every trade, there is a trick of the trade. Similarly, cement में भी कुछ trades होते हैं जो आपको समझना पड़ेगा. So initially, what we tell people is that you join us with a small capital, you watch us for 6 months, okay, 2 quarters. And then we will calculate the profitability. We will tell you the ROI that I told you from your ledger accounts, etc. And then you would shoot up. So first 3 months, don't worry. मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को ये नहीं हो रहा, मेरे को वो नहीं हो रहा, होगा, सब होगा 3-6 महीने के अंदर से. 3 to 6. Some people pick up in 3 months. Some people take little more time, 6 months to pick up the nuances. तो आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हम आपको सिखाएंगे. ओके, हमारे लोग आके आपको सिखाएंगे, समझाएंगे, and we will handhold you all that. So that's the limited point. I have covered all the aspects in the last 15-20 minutes. Now, one by one, you can raise your hands and ask questions, and Bharat, you can moderate. Right. We already have, sir, received a lot of questions. Dhavalji, if you could start taking one by one. You're on mute, sir. Somebody read, no? Somebody read. Bharat, Yeah. Bharat, you only read, no? Since you are the moderator, you read, No, and we then have- everybody will understand. Huh. Answer. No, I will answer. Huh.
So we have like, do we have a dealership available in Mumbai? Can we? Okay, let me answer this. Hmm. One one each. Okay, Yes, one yes. each. No, don't read the repetitive questions. Otherwise, we'll just go forward. So, don't worry about that. कि बॉम्बे में डीलरशिप चाहिए कि नहीं चाहिए. अगर आपका होल्ड है बॉम्बे में डीलरशिप का, अगर आपको समझ में आ रहा है कि आप बॉम्बे में काम कर सकते हो, तो our local teams will tell you. Okay, if there is a conflict of interest. Conflict of interest will only happen if there is only one conflict of interest in this whole game. वो है कि मेरा डीलर ऑलरेडी वहां बैठा हुआ है और आपको उसके दुकान के बाजू में डीलरशिप चाहिए, तो हम शायद आपको देंगे नहीं. अदरवाइज देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट व्हाटसोएवर. ओके, तो ये एक चीज पे ध्यान रखते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे 25 साल पुराना डीलर वहां बैठा हुआ और आपके उसके बाजू में ही दुकान है आपका भी, या बाजू में आप लेना चाह रहे हो, तो हम शायद मना कर दे. लेकिन मार्केट इतनी बड़ी है कि आप आपका दूसरे जगह पे आप रिलोकेट कर सकते हो, दूसरे जगह पे आप डाल सकते हो. ओके, तो वी आर नॉट एरिया स्पेसिफिक. हमारे पास 645 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग ऑलरेडी है. उसमें से 340 डिस्ट्रिक्ट्स में हमको चाहिए. वो लिस्ट भी हमने फ्रेंचाइज इंडिया का साथ शेयर किया हुआ है. तो 50% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स खाली है मतलब हमको चाहिए डीलर वहां पे. ओके, नाउ वन मोर थिंग रिलेटेड टू दिस, कि कितना बड़ा काउंटर देते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल यू आर इन वाशी. बॉम्बे का एग्जांपल देता हूँ. वाशी में आप बैठे हो और आप पनवेल माल बेच रहे हो, तो वो पनवेल का जो काउंटर है वो हम आपको दे देंगे, वो आपका रहेगा. एरिया नहीं देता है हमारे यहाँ पे, एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं है. काउंटर टू काउंटर मैपिंग होता है. तो एसएपी में वी मैप द काउंटर. ओके, सो कोई बोलेगा मेरे को एरिया चाहिए बड़ा, ऐसा नहीं होता है. सीमेंट में काउंटर टू काउंटर मैपिंग होता है. सो दिस इज वेरी रीजनल स्पेसिफिक क्वेश्चन. आपका दुकान, आप कहाँ पे हो, कैसे हैं, कहाँ बैठना चाहते हो, उसके हिसाब से हमारा रीजनल टीम आपको हैंड होल्ड करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Right. He was also just trying to say like, is it 5 lakh enough to start with? Yeah. So 5 to 7 lakhs is what we say, but in city like Bombay थोड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि बॉम्बे में क्या है कि कंस्ट्रक्शन, अगर आप पनवेल में बैठते हो, रायगढ़ में है, थाने में है, कल्याण में है, या ऐसे जगह पे कहीं है, तो वहां पे क्या है कि वो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है. बट वी आई स्टिल सजेस्ट दैट वी शुड स्टार्ट विथ वेरी स्मॉल अमाउंट. ओके, एक ट्रक मंगा के बेचना, 2 ट्रक मंगा के बेचना, फिर दिन में 1 ट्रक मंगा के बेचना, दिन में 10 ट्रक मंगा के बेचना. दैट्स हाउ द स्केल अप विल हैपन. सो ऑल आई सी दैट, मैं ऐसे देखता हूं. तो हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरे को दिन में 3 ट्रक चाहिए, तो मैं बोलूंगा डिपॉजिट बढ़ा देना, 2 का 6 लाख डिपॉजिट कर दो. 2 लाख में 1 ट्रक आता है 30 टन का. ओके, मोटा मोटी. तो वो जो आप जो 2 लाख का डिपॉजिट देगा, मैं आपको 1:1 का लिमिट दूंगा. ओके, लेकिन मैं सीडी भी देता हूं आपको. तो अगर आप सीडी कैश डिस्काउंट दिया तो आपको 5 रुपए 6 रुपए सीडी मिलेगा. सो देयर आर, दैट्स व्हाट आई सेड कि वो आपको लोकल आदमी बिठा के समझाएगा पूरा. और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये 2 लाख मेरा डिपॉजिट कम है, मेरे को दिन में 3 गाड़ी चाहिए, तो आपको 6 लाख रुपए का डिपॉजिट लगेगा. ओके, सो दैट इज हाउ वी वर्क. नाउ व्हेन आई सेड 2 lakhs, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली ऐसा होता है. 2-3 लाख रुपए डिपॉजिट से शुरू करते हैं, 5-7 लाख रुपए हाथ में रखते हैं, लोग रोटेट करना शुरू करते हैं. ये 2 महीने की बात है. जैसा बिजनेस बढ़ गया 2 महीने के बाद, आपका डिपॉजिट भी बढ़ जाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा. सो योर इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टर्नओवर दैट यू डू. ओके, होप आई हैव मेड इट वेरी क्लियर. तो हमारे यहाँ पे, जैसे मैंने बताया ना, 1,000 करोड़ रुपए का डीलर है. वी हैव इन बॉम्बे डीलर्स. Should I take the next question now? Prem sir, am I audible? I think we can start with question. I think Prem sir must be having a हाँ, network so issue. दूसरा, हाँ, right. So the next question is, Okay, sir has come. Yeah. okay. एक और क्वेश्चन है कि in case of direct delivery at customer site, how much time will it take to get the ordered quantity available at the required location? Dhaval, maybe if you can also answer. So maybe. if it is a small quantity of 50 tons, 50 bags, 100. Hello, can you hear me? Yeah. Somebody. No, sir, voice is not audible now, all of a sudden. म्यूट कर रहा है मेरे को कोई. Can you Yeah, hear me yeah. now? Yeah. हाँ. No, again, you're not audible. I think due to the internet or something.
See, I will just answer, right? Normally, when there is a small quantity like 50 bags or 100 bags, we have a regional depots also there. So, that will be a minimum time of around 6 hours to 12 hours for the delivery, right? पर जहाँ पे रिमोट लोकेशंस हैं, राइट, अपार्ट फ्रॉम द मेजर अर्बन एरियाज, राइट, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम कोई कोई बार ज्यादा लग जाता है, लाइक इट विल टेक लिटिल बिट मोर टाइम, but more or less, we have observed within 24 hours, like today's order will be delivered by tomorrow itself, like Wow. max to max, like that, right? Unless and until it will be there from a plant. Like if it is a big delivery, 40-ton truck or 35-ton truck from the direct factory, I mean direct manufacturing plant, then it will take maybe 1 or 2 days, because the truck will load from a plant and then it will reach the destination. Maybe the distribution is around 100-150 kilometers, like that. But normally we assure that 1 day is the maximum for local deliveries. Right. The next question, how much investment required in all the three models, retailer, pure, the wholesale order, or the hybrid? Right. Very good question. As Prem sir also mentioned, I mean, if you don't have experience into cement, we would suggest you start with a dealership. Right. Mm. So once you become a dealer, observe yourself for 3 to 6 months, how is business is your, going on, how much turnover you are making, how much you are familiar with cement industry. And then slowly and gradually you start making sub dealers under you, expansion to the wholesale business, like that. Because आप अगर पहले से wholesale में चले जाएंगे, तो you are not knowing the industry, and if you are going into that circle of credit and everything, it might that your money will stuck up in between. So I mean, you can start, there is no issue, as sir suggested. Yes, sir is also the now there with us. So you can start initially with as suggested 2 or 3 lakh as a deposit, and 5 lakh 5 to 7 lakh as a liquidity cash with you, right? Start doing business with it, observe for 3 to 6 months, and then jump into hybrid model, wholesale and direct retail model, like that. Right. Let's quickly move on to the next. Though we have a lot of questions, I'm sorry, but I don't think that we will be able to answer all the questions. However, I will share a number, right, where you can get in touch with us, because I will also have to take care of time of Dhavalji and Prem sir, right? He cannot be here throughout the day. But yes, I really appreciate everyone whosoever is asking your question. Thank you so much. Next, a few questions that are important we'll take. Like, is there any franchise fee or a certified retailer fee need to pay to the brand? Dhavalji. Yeah. No, the answer is no. The answer is no. Only the deposit, okay? There is no fees. And this deposit is also refundable. It is refundable when you are quitting, okay? You get this refunded. And also there is an interest that we Wow. give, 6.3% or something like that on the 2 lakh rupee deposit. So that's what I said. If you want to increase the deposit, nothing. As the business progresses, you will increase it, okay? But initially, that is the thing. There is no franchisee fees as such. So it is like, to start with, It's a we low can investment game. correct. So it is like कि 2 लाख Yeah, रुपए अगर मैंने सबमिट किया, मैंने डिपॉजिट अगर किया, तो 2 लाख रुपए तक का मैं ऑर्डर दे सकता हूँ, ले सकता हूँ, नहीं ऐसा ही है? correct. एंड इन केस इफ आई 2 लाख तक नीड का माल मोर, मिलेगा. हाँ, अगर मेरे को यही हाँ, अगर 5 लाख का चाहिए, 10 लाख का चाहिए, then it can increase accordingly. I'll have to pay more deposits and then I can correct, take the order accordingly, right? Cool. correct, correct, Since you have, correct. there is another question. Since you have your own marketing channel, do you provide business leads to your local partner, or do you handle the business directly? No, no. So in trade business, all the leads will come to you because you have a shop. Of course, so naturally that you are the lead generator for us. We provide leads, but I think it is not sufficient. You have to move on to the market, and then you need to get some leads in the beginning stages and execute it. Sir, is there any
territory exclusivity for the retailer, like 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर ऐसा करके कोई एक्सक्लूसिविटी हो? या करेक्ट. तो क्या है, like how much is the the distance for area exclusivity? No, there is nothing called exclusivity as such. Okay, but I told you that we have exclusive dealer, but we give extra discount to them. Okay, it is not an area exclusivity. It is when you deal with us 100% and you don't take any other competition brands, then we give you some discounts, extra discounts. Okay, as I told you, in the construction space, in the cement industry, we have only 17% market share. Huh? आप समझ रहे हो, पूरा मार्केट खुला है आपके लिए. Adani ACC put together, AAA put together, we have only 17% market share. So you have huge market lying there, and you have to capture that market. Hence, we want more dealers. Okay, so there is no exclusive region or exclusive location that we provide, but we give exclusive discounts if you deal with us. That's how we work, and that is to the tune of 2%. Huh? So बहुत बड़ा margin है वो. It's a big margin. Yeah. Next question. इसमें है ओके, सो एक ने लिखा है, सर इसमें अगर बिल्डर को टारगेट करेंगे तो डेफिनेटली इसमें क्रेडिट साइकिल का क्या रहता है, बिकॉज इसमें बड़ा पैसा लगेगा. करेक्ट. हमारे इस डिस्कशन में हम लोग को कवर ही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज बिल्डर सेगमेंट में हम लोग जाते ही नहीं है. हमारे पास माल ही नहीं होता देने के लिए. तो ट्रेड में हम लोग बेचने की कोशिश करते हैं पूरा माल पहले. सो वी डोंट एनकरेज नॉन ट्रेड बिजनेस, एंड हेंस ये क्रेडिट वगैरह का बात आता नहीं है उसमें, क्योंकि वो बहुत डेंजरस बिजनेस होता है. वो आपका पूरा पैसा लेके सब करके बैठ जाएगा. तो वी डोंट, उसके लिए पूरे एक से बड़े बड़े लोग बैठे हुए मार्केट में जो सालों से करता आ रहा है, सालों से दे हैव दैट एबिलिटी टू डू इट. बैंक के थ्रू फाइनेंस वगैरह करते हैं, चैनल फाइनेंसिंग वगैरह कर लेते हैं वो लोग. सो दैट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर. ओके, सो एक तो माल नहीं होता हमको देने के लिए, बिकॉज इन नॉन ट्रेड ब्रांड डजंट वर्क. उनको तोल के चाहिए होता है किलो के भाव में सीमेंट, एंड वी डोंट मेक मनी देयर. दूसरा क्या होता है कि वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, फिर क्या करेंगे हम लोग, वी डोंट नो वेयर टू सेल द मटेरियल. तो उसके चक्कर में आपको देखना पड़ेगा क्या करना है. तो दैट इज हाउ इट इज. So we don't know. That's a very dangerous game, and we don't suggest initially the dealers to get into it. Yeah. Next. राइट सर, वैसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, बट व्हाट आई एम डूइंग इज दैट आई एम सेंडिंग देम गौरव's नंबर, राइट? सो एनीवन हु वुड लाइक टू गेट इन टच विद अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, आई थिंक you can get in touch with Gaurav Arora. I have shared his number in the chat box, 9220634433. हमारे local coordinators का, so that our people can visit them and they can discuss. हाँ, तो आई मीन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज गोइंग टू बी मिस्टर गौरव अरोड़ा से आप बात कर सकते हो. इनका नंबर मैंने शेयर कर दिया है चैट में. You please get in touch with him, and then we will arrange a call with you, with Dhaval sir and Prem sir, where you can have more clarity, because I can see a lot of questions, right, related to the locations and many other things. So I mean that will be the best way to give all the answers, because it is going to consume more time. Right, I think Dhavalji is traveling, right, and Prem sir too. So that will be the best. Gaurav Arora, you can see. Sub, Gaurav, in case if you would like to add anything. So मैं तो यही बोलूंगा कि ओवरऑल अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है, फ्रॉम द इनसाइड पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव टू गेन द लर्निंग अबाउट व्हाट इज दिस अपॉर्चुनिटी, कुछ अभी भी ऐसे गैप एरियाज हैं जहां पे थोड़े से अनक्लियर पॉइंट्स हैं इन्वेस्टर्स के, जो मैं देख सकता हूं. चैट बॉक्स में काफी लोगों ने सेम ही क्वेरी पूछा हुआ है कि हमें एग्जैक्टली जो है 2 लाख रुपए अगर हम डिपॉजिट देते हैं या 3 लाख डिपॉजिट देते हैं, तो एग्जैक्टली कितने हमारे को बैग्स मिलेंगे या यूनिट्स कितनी मिलेंगी. वो यूनिट्स के बेसिस पे हम कितना सेल कर सकते हैं. वो 2 लाख को हम सपोज आज शुरू करते हैं, तो आगे हम कैश बेसिस पे धीरे धीरे करके इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं. ये तो समझ में आया. लेकिन 2 लाख रुपए जो हम इनिशियली एज अ डिपॉजिट दे रहे हैं, उसके सामने हमें 2 लाख का जो क्वांटिटी मिल रहा है सीमेंट का, वो बैग्स के फॉर्म में मिल रहा है. और अगर यस, तो कितने बैग्स मिल रहे हैं, और उसमें बैग के हिसाब से हमारे को
अपना मार्जिन काउंट करना है ग्रॉस या नेट, या फिर हमें काउंट करना है कि हम वो 2 लाख में कितना पैसा बनाएंगे, जो हमारा मैं बताता कमाल हूँ बिकेगा तो कितना सो बनेगा? सो बताता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताया, एक एक टन, हम लोग टन में बात करते हैं। एक टन मतलब उसमें 20 बोरी आता है, 20 बैग 50 किलो का। ओके, ना 50 50 किलो किलो का का 20 बैग। 20 बैग टन। ओके, और एक ट्रक माल जो होता है वो 32 टन का होता है, 32 टन। अच्छा, बड़ा वाला 32 टन फैक्ट्री का से, होता है। बड़ा फैक्ट्री से जो निकलता है तो 32 टन का होता है। तो 32 टन और एवरेज प्राइस 300 रुपए पकड़ लो आप एक बैग का, एवरेज प्राइस कैलकुलेशन पर्पस के लिए। ठीक है। तो 32 टन मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 300 कितना हो गया? 170 सर 180 आप करीबन आता है, ठीक है। तो आप जब 2 लाख रुपए, हेलो, हाँ हाँ प्लीज। हाँ, सर आपकी ना आवाज नहीं आ रही, तो धवल जी एक आप ट्रक, एक्सप्लेन करेंगे? डॉक्टर प्रेम, आपका ना आवाज मिस हो रहा है बीच बीच में, इसीलिए अभी आ कीवर्ड्स रहा, हमारे से अभी मिस हो रहे हैं। अभी आ रहा है। हाँ तो अभी भी, हाँ तो पहले भी रहा Yes, था, yes, लेकिन sir. बीच बीच में Your मिस हो voice is जाता है। coming. हाँ हाँ, सो एवरेज मान लो 32 टन का एक ट्रक आता है। 32 टन मल्टीप्लाइड बाई 300 रुपये मल्टीप्लाइड बाई 20, तो हम्म, 170 180 के करीबन आता है, 1,80,000 के करीबन एक ट्रक का 190, भाव है। 190 it will come. Yeah, वन, हाँ 190 वट 190. एवर। ओके, तो इसीलिए 2 लाख रुपए लेते हैं ताकि एक ट्रक माल आ जाए आपके पास, ठीक है। ठीक है। नाउ व्हेन दिस ट्रक मटेरियल कम्स इन, तो डिपॉजिट आपका एग्जॉस्ट हो गया, आपके पास तो अभी लिमिट नहीं है, 1:1 का लिमिट खत्म हो गया। नाउ नाउ गॉट इट। तो हमने दो डिजायर, वाइट लाख का डिजायर डिपॉजिट दिया, 2 लाख का सामने माल आ गया, 1,90,000 का माल माल आ आ गया। गया, तो अभी आज 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 आपके पास माल आया और आपको वापस एक ट्रक चाहिए, मान लो कल। तो दो चीज हो सकता है, एक तो डिपॉजिट बढ़ा दो 2 लाख से, या हाँ। आप वो जो पहला 190 का जो माल आया उसका सीडी दे दो, आप उसको आप कैश डिस्काउंट करो, सेम एनईएफटी कर दो, तो क्रेडिट लिमिट 2 लाख का वापस खुल जाएगा आपका, अच्छा, ठीक मतलब है। आप तो कह रहे और हो एक कि ट्रक, तो 2 लाख का डिपॉजिट देने के बाद 2 लाख रुपए और डिपॉजिट करा, तो आपको और 2 लाख रुपए का माल आ गया ना? हाँ, और एक, दिस इज द फर्स्ट मेथड। ओके, द सेकंड मेथड इज दैट आप कैश दे दो, 2 लाख रुपए डाल दो, 1,90,000 डाल दो वापस, तो क्रेडिट लिमिट खुल जाएगा आपका। तो क्रेडिट लिमिट खुल जाएगा, तो आपको वापस एक ट्रक माल का पैसा मिल गया, ठीक है। और इसमें 1363। इसमें जो हमने टोटल 32 टन जो माल लाया, ये 32 टन में हमारे को कितने बैग्स मिलेंगे, कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना पैसा बना पाएंगे हम? ये 2 लाख रुपए का माल बेचेंगे तो इसमें हमारे ग्रॉस मार्जिन कितने होते हैं? धवल आप बता See, पाएंगे? yeah, yeah. See, normally it will start per bag, like 15 rupees, 10 to 15 rupees per bag, right? अच्छा, 10 Depending on रुपए the area, हम लोअर right? साइड लेके चलते हैं, 10 रुपए, हाँ, राइट? तो right. एक बैग पे 10 रुपए का अपने को ग्रॉस मार्जिन है। अब इसमें लोडिंग अनलोडिंग है, या स्टोरेज है, या जो हमारी दुकान का रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं हमारी, नहीं नहीं, नहीं, वो आपने वो एक कॉस्ट। मिनट, immediately मैं आप समझाता नहीं हूँ। कर डबल सकते. डबल होल्ड Yeah, ऑन, डबल होल्ड yeah, ऑन, लेट मी एकदम अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। 1 मिनट लगता है इसमें, आपको बताता हूँ मैं। आरओआई का फंडा आप समझिए। ओके, सबसे पहला yeah. आरओआई का फंडा ये है कि मैंने ये 2 लाख रुपए का माल लिया। ओके, 300 रुपए का बोरी में मैंने 6 रुपए कमा लिया, मान लो गिरे से गिरे हाल में 2 टका कमाऊंगा ना नेट घर पे। 4 रुपए खर्चा हो गया हमारा, 4 रुपए खर्चा हो गया सब हमारा पर पकड़ लो, बोरी। खर्चा बिर्चा छोड़ के, खर्चा वर्चा छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, आपने सब खर्चा एक्सपेंसेस करके एक बोरी पे अपने 6 से 8 रुपए कमा लिया, मान लो गिरे से ठीक गिरे है। हाल में। सो नेट मार्जिन ऑन 300 रुपीज इज 6 रुपीज, विच इज एज गुड एज 1800। 2% मतलब मार्जिन। ओके, मैं, हाँ नेट मार्जिन मतलब मेरे जेब में 2 टका आ गया, 2 टका से 3 टका मेरे जेब में आ गया, मतलब मैं ठीक है। मिनिमम से मिनिमम की बात कर रहा हूँ। धवल ने बताया 15 रुपए, 15 रुपए एवरेज है। मान लो मैंने सारा बोरी का बोरी ट्रांजैक्शन एकदम घाटे में कर दिया, मतलब एकदम लोवेस्ट मार्जिन में कर दिया, एंड दैट मार्जिन इज 6 रुपीज। आई एम जस्ट गिविंग यू सम एकदम पेसिमिस्टिक नंबर दे रहा हूँ। ओके, अब मेरे पास माल आया आज, मैंने माल आज निकाल दिया, आज कैश आ गया मेरे पास। हाँ जी। 2 लाख रुपए का माल आया, 2 लाख रुपए निकाला, 2 लाख रुपए के ऊपर मैंने 6 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 30 टन, मतलब 900 बोरी पे मैंने 6 रुपए कमा लिया। तो कितना कमाया गिनती कर लेना, आज मैंने कमा लिया। फिर ये कल वापस मैंने रोटेट किया, वापस मैंने कंपनी को दिया, वापस माल लिया, तो उसमें भी 6 रुपए कमाऊंगा मैं। तो रोटेशन हो गया। तो नॉर्मली क्या हम बोलते हैं कि हमारा जो बड़ा होलसेलर होता है, जो सबसे बड़ा मार्केट में बैठा हुआ है,
वो जो है साल में 25 से 30 बार पैसा घुमाता है। ठीक है, मतलब समझ 2 गया? लाख रुपए को आप 25 बार घुमा रहे हो। और फिर 2% कमा रहे हो, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 2% हो गया 50% ROI। अच्छा, ये ऐसे काउंट हो गया है ये। हाँ, दैट इज हाउ इट इज ना, बिकॉज आपका हाई रोटेशन गेम है वो ये। 2 लाख रुपए बार 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 घूमे जा रहा है ना, तो घूमता हमने उसको रहेगा ना। 25 हाँ, बार फिर वो रोटेट कर दिया। दो का चार करोगे, 4 का 6 करोगे, 6 का 15 करोगे, तो 15 जो है वो 25 बार घूम जाएगा। हाँ, तो दैट इज हाउ जितना इट इज, तो इट्स हाई। so this business is all about the rotation. So I'm sure that the करेक्ट, audience who is joined with us today are able to understand that, boss, this business is all about the rotation. This business is all about cash flow management. This business is all about reaching to the maximum efficiency of your delivery and your sales from your unit, from your shop. और जितनी शॉप्स करेक्ट, या जितने आप अपने टच पॉइंट्स बढ़ा दोगे, उतना आपका लास्ट माइल बढ़ जाएगा, उतनी आपकी रीच बढ़ जाएगी, और आप एक 100 फुट 150 फुट की दुकान एक जगह से 2 लाख रुपए से शुरू करते हो, आप शहर में 4 5 6 जगह पे बना सकते हो, और वो आप मल्टीपल टाइम्स उसको ग्रो करो. सो लाइक यू हैव other businesses where you invest 20 30 lakh rupees, maybe 50 lakh rupees in one business. यहाँ पे आप 10 जगह पे अलग अलग दुकान खोल के 10 जगह पे 2 2 लाख का माल लेते हो, और लाख रुपए 2 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल और ले लो, तो 5 लाख रुपए इज ऑन अ हायर साइड यू आर इन्वेस्टिंग. Let's say you do this business in 10 places, you invest about 50 lakh rupees, but 50 lakh rupees you rotate multiple times, right? करेक्ट, And you earn 2 to 3% on this money, and you rotate this at least 10 times a year. तो समझ लो कि आपका इस बिजनेस में जो है ना, आपका जो गेम है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है. जितना आप इसको ग्रो करोगे, उतना आपको इसके अंदर नेट मार्जिन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपकी वही रहेगी और आपकी नेट इनकम बढ़ती चली जाएगी. सो आई थिंक बेसिक फॉर्मूला जो इस बिजनेस का है वो है कैश फ्लो मैनेजमेंट एंड योर ऑर्डर मैनेजमेंट एंड योर इन्वेंटरी मैनेजमेंट. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट। एनीवेयर. नो नो, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। उसका रीजन मैंने आपको बताया था कि इसमें इन्वेंट्री रखते नहीं है ना आप लोग, मतलब डीलर इन्वेंट्री नहीं रखता है, वो Right. सारा हम मैनेज कर रहे हैं। प्लस एक्सपेंसेस नहीं है, ताम झाम ड्रेस वाला सेल्समैन ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक सिंपल आदमी चाहिए जो दुकान में बैठा रहेगा। अगर आप बड़े ओनर हो और आपके पास टाइम नहीं है, तो एक बंदा चाहिए जो इसको मैनेज करेगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाएगा, बस। सो सो लोडिंग अनलोडिंग सारा कंपनी कर रही है, बिल टू शिप टू भी कंपनी कर सकती है. सो इन केस समबडी इज लुकिंग फॉर लेट्स से द एंटायर कार, एंटायर बोगी, तो ये सीधा आपके कस्टमर के ऊपर ओके, भी नेक्स्ट, डिलीवरी एनी हो अदर जाएगी, क्वेश्चंस? right? So I think we are sorted in a way that we know exactly the principle of this business: investment and supply chain, inventory management, efficiency, rolling, cash flow management. सब कुछ हमने क्लियर कर लिया है. बिसाइड्स अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो अभी भी अनआंसर्ड है, तो बेटर है आप मुझे वन ऑन वन you can reach out to me. Bharat has actually shared my number in the chat box. In the interest of all, let's end this discussion because this is going endless. मुझे लग रहा है 1.25 घंटा हो गया है हमें. Let's Yes. end this discussion now. Give a little thought, and people who are genuinely serious for this opportunity, reach out to me. I will align you with my local team in your city, and we can continue our discussion and align with Dhaval and Dr. Prem for the further discussions, or maybe the local teams based out of the local cities of your origin, and maybe you can reach out to the Adani office directly with the help of Franchise India team, and you can block the territory of your choice with immediate 2 lakh rupees paid upfront and just get going on this. Absolutely. And so we have a very good team, right? Spreaded all across India. So support perspective say you won't have any problem at all. And also in opportunity perspective, so in case if you look into this opportunity, I think India is one of the world fastest growing construction and the infrastructural market right now, with rapid urbanization, with increased government spending on the infrastructure and the continuous growth in the housing sector as well. And that is creating the demand for the cement, right? As Prem sir ने बोला कि cement का कोई दूसरा alternative है ही नहीं, right? So this is something you can sell. Opportunities बहुत सारी हैं. Government initiatives are also going on. PM Awas Yojana, Smart City Mission, the highways, metros, a lot of other things. घर भी आप अगर देखो बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, right? So lot of opportunities, right? And for the dealers,
specifically, this creates a long-term business opportunity. Cement is, of course, is an essential building material with consistent demand throughout the year, right? Serving individual home builders, the contractors, the builders, the retailers, the institutional customers. So a well-established brand like Adani, supported by the strong distribution network and the attractive dealer program, I think this creates a very good opportunity for the entrepreneur, for the, as a sustainable as well as the scalable business model. So in case if you want to get in touch with us, I think I already have shared number multiple times. Gaurav is accessible. He can, of course, align with his team, spread it all across India. And yeah, that is how you can get in touch with us. I think that's it for the day. Thanks so much, Prem sir, for joining us. Thank you so much, Yeah. Dhavalji, for Thank joining Okay. us you. today. Thanks a lot. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, Gaurav. Right, see you everyone Good tomorrow day. once again with a new brand, and we'll explore another business opportunity. Till then, take care.